Well, we are going to start a new chapter which is associated to the chapter matrix which we have studied earlier. Well, every square matrix can be associated to an expression or a number which is called its determinant. See, if I am given a 1 by 1 matrix, a square matrix, then its determinant, which is denoted by determinant of A or determinant of A or delta, is given by the element itself. That is, suppose I have a matrix A is equal to a 1 by 1 matrix which includes say minus 5, then its determinant, then determinant of A, that is determinant of A. This is read as determinant of A, not modulus of A, and determinant of A is determinant of this matrix and it is the element itself. So this will give me minus 5. Suppose I have a matrix A which has an element A, then obviously determinant of A is equal to A. So for 1 by 1 matrix, this matrix can be associated to the element itself, to this number, to this expression. This is known as the determinant of this matrix. Let's talk about a 2 by 2 matrix. Well, to find the value of determinant of A, what we do is we multiply the elements of leading diagonal, that is AD, and we subtract BC from it. AD minus BC. The product of elements in leading diagonal minus the product of elements in non-leading diagonal. For a 2 by 2 matrix, if we need to find the determinant of it, what we do is AD minus BC. Suppose I have given a matrix 1, 2, 3, 4. This matrix is say A, then its determinant is equal to AD. That is 1 into 4 minus 3 into 2. So this will give 1 4 ja 4 minus 6 is equal to minus 2. The value of determinant can be negative. There is no problem at all. Well, if I have a matrix A is equal to 3, 2, 5, minus 4. If I have a matrix, then its determinant is equal to determinant of 3, 2, 5, minus 4. That will give me 3 into minus 4. The product of elements in leading diagonal minus. So minus is there, 5 into 2. This will give me minus 12, minus 10, that is minus 22. This is how we find the determinant of a square matrix. So, every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant. Well, so since every square matrix can be associated to a number, so this may be, the determinant may be thought as of a function which associates every square matrix to a unique expression or number or a quantity, right? So let's talk about the definition. Every square matrix, yes, determinants are defined for square matrices only. Well, every square matrix can be associated to an expression or a number which is known as its determinant. Determinant can be thought as a function which associates each square matrix with a unique number. That number may be real or complex. Actually, in CBSE, our NCERT textbook, we will be talking about determinants with real entries up to order 3 only. So, function of A, the determinant is function of a square matrix A which gives us K. That is, it is a function from the set of square matrices to the set of real or complex numbers as the case may be, where A is element of square matrix and K is a
number, that is real or complex, as the question is. So F is the determinant of the matrix A. Well, it's denoted by determinant A or delta or determinant A. So the determinant A, what is the difference between matrix and determinant? Simply, matrix is the rectangular array of numbers or quantities, that is an arrangement, but determinant is a quantity associated to a square matrix. The order of a matrix can be rectangular, that is, there is not needed that number of rows is equal to number of columns, but when we talk about determinants, number of rows must be equal to number of columns, that is, only square matrices have their determinants. Second thing, while writing, matrices were written in the square brackets, but determinants are written between the vertical bars. Determinant के लिए हम क्या use करेंगे? Vertical bars, and this vertical bar should not be confused with the modulus sign or the absolute value sign. No, it is not about absolute value. For a 1 by 1 matrix, the element itself is the value of the determinant. For a 2 by 2 matrix, simply find the product of the elements in leading diagonal and subtract the product of elements in non-leading diagonal from it. That is how we evaluate a 1 by 1 determinant and 2 by 2 determinant. On a later stage, we are going to talk about 3 by 3 determinant. Well, so this is all about definition. Now let's take some question and try to understand how to evaluate it and what is the difference between matrix and determinant. We have two questions here with the same data, but we are well known to matrices and determinants now. Matrices are written in square brackets, but determinants are written in vertical bars. So this is determinant, and here we are talking about matrices. Well, if two matrices are equal, then we know that each and every corresponding elements must be equal. So since the two matrices are equal, so their corresponding elements must be equal. So 2 must be equal to 2x. 2 must be equal to 2x. Okay, 4 is equal to 4. Well, alright, 5 is equal to 5, and this must be equal to this. 1 is equal to x, which simply gives x is equal to 1. Well, so on comparing the corresponding elements in case of matrix, now we talk about determinant. Two determinants are equal if their values are equal. In case of determinant, we are not going to compare the corresponding elements. It is not needed that the corresponding elements are equal. See, this question was asked in CBSE exam because some of the students, what they did, they just compared, and fortunately in this question answer is correct. For matrix it is giving 1, fortunately. Rarely happens. Well, so since the values of two determinants are equal, so we evaluate the value 2 into 1 minus 4 into 5. The product of leading diagonal minus the product of elements in non-leading diagonal. This gives us 2x into x minus 5 into 4. So 2 ones are 2 minus 4 to 5 are 20 is equal to 2x square minus 20. This minus 20 is cancelled out. 2 is equal to 2x square. X square is equal to 1. That gives us x is equal to plus minus 1. Because x square is equal to 1, which gives us x is equal to plus minus 1. Yes, if we take x is equal to 1, then also the value of determinant is same, and if we take x is equal to minus 1, then also the value of these two determinant is same. So here it gives only one value, but here it is giving two values. Well, हम NCERT बुक से क्वेश्चन लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. If x, question 8 on page 109, exercise 4.1. If x to 18x
is equal to determinant 6 to 18, 6, then what is the value of x? Well, since the two determinants are equal, so we find the value of this determinant x into x, x square minus 18 2 ja 36. Here 36 minus 18 2 ja 36. So x square minus 36 is equal to 36 minus 36 is 0. That gives us x square is equal to 36, x is equal to plus minus 6. The first option is x is equal to 6. If you try to compare the element, then also it is giving the answer x is equal to 6, but it is not about comparing, it is determinant. So what we will compare? We will compare the value of this determinant, and that is going to come out plus minus 6. Now, if I change the question, if I write for what positive value of x makes the following pair of determinants equal? What positive value of x makes the following determinants equal? So we find the value of this and this, we compare, we get two values, x is equal to plus 6 or x is equal to minus 6. But in the question CBSE एग्जाम 2010 में इस टाइप का क्वेश्चन दिया, वहां पूछा किस पॉजिटिव वैल्यू, यानी हम ये 8 क्वेश्चन पढ़ के जाते हैं, 8 में है देन x इज इक्वल टू, पहला आंसर x इज इक्वल टू 6 जो कि कंपेयर करने पे मिलता है, गलत हो जाएगा। दूसरा आंसर x इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 जो कि करेक्ट आंसर है इस केस में। लेकिन अगर ये पूछे व्हाट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ x मेक्स दिस टू डिटरमिनेंट्स इक्वल, देन वी विल डिस्कार्ड दिस नेगेटिव वन एंड वी विल आंसर ओनली x इज इक्वल टू 6। अब हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इस एक्सरसाइज से। Well, we have discussed the definition of determinant. Determinant is a quantity associated to a square matrix. Notation: determinants is written as determinant A or between the vertical bars determinant of A or delta. Determinant of order 1 and 2. When we talk about determinant of order 1, then the element itself is the answer, the value of the determinant. And when we talk about the determinant of order 2, well, I have a matrix A, B, C, D, then its determinant A, B, C, D will be given as simply AD minus BC. AD minus BC. The element, the product of elements in leading diagonal elements minus the product of elements in non-leading diagonal elements. Well, so difference between matrices and determinants: matrix is a rectangular arrangement in which the corresponding elements must be equal, but the determinant is a quantity associated to a square matrix, so the corresponding elements need not to be equal. बार बार क्वेश्चन एग्जाम में इसी तरह का पूछते हैं जिसमें हमें लगता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल करने से हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे हमारी बुक में एक क्वेश्चन है, फाइंड x if this determinant is equal to this। तो अगर आपको लगेगा वो 2x को इससे कंपेयर किया x को, लेकिन हो सकता है यहाँ x की वैल्यू 1 ना हो। तो देखते हैं यहाँ लेफ्ट हैंड साइड का डिटर्मिनेंट एवेल्युएट किया, 2 into 1 minus 5 into 4, 2 into 1 minus 5 into 4, 2 into 1 minus 5 into 4 is equal to 2x into x, 2x into x minus 6 into 4, 6 into 4. This gives us 2 minus 20 is equal to 2x square minus 24. We transpose all these terms to this side. So this 2 minus 20 is minus 18 is equal to 2x square minus 24. If we transpose 24 to this side, this will give me 2x square is equal to minus 18 plus 24. So this gives 2x square is equal to plus 6. So x square is equal to 6 by 2, that is 3, which gives us x is equal to plus minus root 3. Here we are to find the value of x. अगर क्वेश्चन में ऐसे बोलता for what positive value of x these two determinants are equal, then we would have discarded this minus root 3. Is it okay? Now this question, for what value of x these two determinants are equal. Here we are not going to compare the corresponding elements, but the value of determinant. Determinants are
the elements are put in vertical bars, but in matrices we have square brackets. So these are determinants. 2 into 5, 2 into 5 minus 4 into 3. Minus 4 into 3 is equal to 5 into x. 5 into x minus 2x into 3. Well, 2 5s are 10 minus 12 is equal to 5x minus 3 to the 6x. 10 minus 12 is minus 2. 5x minus 6x is 1x minus x. So x is equal to 2. In both the questions, in this question, actually, if you confuse with matrix, then your answer will mismatch because the determinant gives you 2 values. But here, अगर आप कंफ्यूज भी हो जाते तो भी आंसर क्या आता 2. इसीलिए बहुत जरूरी है फर्क समझना. मैट्रिसेस स्क्वायर ब्रैकेट में है और डिटर्मिनेंट वर्टिकल बार्स में है. और अब हम सभी जगह डिटर्मिनेंट की बात करने जा रहे हैं. डिटर्मिनेंट इज अ क्वांटिटी एसोसिएटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इसको ये एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन है. 2x2 के जितने भी क्वेश्चन हमने ले लिए, फिर हम बात करेंगे इवेल्युएशन ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3. चले 2x2 की. तो ये आएगा 2 into -1. ध्यान रखिए कोई भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना उसे जरूर ब्रैकेट में लिखें. देन माइनस प्रोडक्ट ऑफ लीडिंग एलिमेंट्स इन लीडिंग डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ दिस. So this gives me minus 5 into 4. So 2 into -1 is -2. Minus of -20, that gives me -2 plus 20, that is 18 is the answer. The value of determinant can be positive, negative or 0. Here for this determinant, evaluate the value of this, then cos theta into cos theta, cos theta into cos theta minus sin theta into minus sin theta. So this gives us cos square theta. Minus into minus is plus sin square theta, and cos square theta plus sin square theta is always equal to 1. तो इसी क्वेश्चन को कभी कभार ये भी पूछते हैं, prove that the value of this determinant is independent of theta. या फिर मान लो यहाँ पे थीटा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी रख दे, find the value of this determinant for theta is equal to 5 pi by 90. तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं, टेबल में हो ना हो, sin square theta plus cos square theta is always going to be 1. So function of 5 pi by 19, if it is f of theta, function of theta, then function of 5 pi by 19 is simply 1. इसकी बात करें, multiplied by x plus 1 minus x plus 1 multiplied by x minus 1. This is a plus b multiplied by a square minus ab plus b square. So this is a cube plus b cube, that is x cube plus 1 cube minus a plus b into a minus b is a square minus b square, that is x square minus 1. A square, that is x square, minus 1 square is 1. So this is x cube plus 1 minus x square minus into minus is plus 1, that gives us x cube minus x square plus 1 and 1 is 2. So this is how we evaluate 2x2 determinant. Well, अब हम बात करेंगे 3x3 का डिटर्मिनेंट को कैसे इवेल्युएट करें. ये 3x3 डिटर्मिनेंट है. डिटर्मिनेंट को वर्टिकल बार्स में लिखते हैं. ध्यान दीजिए, ये है फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3. करते कैसे हैं? माना मैं फर्स्ट रो के अलोंग इसको एक्सपेंड, इसको 6 तरीके एक्सपेंड करने के, फर्स्ट रो के अलोंग, सेकंड रो के अलोंग, थर्ड रो के अलोंग, या फर्स्ट कॉलम के अलोंग, सेकंड कॉलम के अलोंग, या थर्ड कॉलम के अलोंग. इसके अलावा सॉरस डायग्राम भी है जिसकी बात हम बाद में करेंगे. अभी हमारे पास है ज्यादातर हम फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, या हम एक्सपेंड करते हैं उस रो या कॉलम के अगेंस्ट जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो. इनकी बात हम करेंगे. अब सबसे पहले यहां लिखा जाता है दिस एलिमेंट A11. A11 is multiplied किससे? Multiplied by a determinant of order n-1. ये n ऑर्डर का है, इससे एक कम ऑर्डर का. कैसे? इस रो और इस कॉलम को छोड़ दो जिसमें ये है, तो बचा क्या? इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, बचा ये. तो A22, A23, A32, A33.
फिर ये माइनस। अब ये माइनस क्यों है? क्योंकि हम हर एक एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर करके ऐड करते हैं, लेकिन को फैक्टर का साइन कैसे डिसाइड करते हैं? -1 रेज टू i प्लस जे। कौन सी रो में ये? 1। तो -1 फर्स्ट रो प्लस सेकेंड 1 + 2, ये कैसा आया? ऑड। तो ये ऑड आने पे -1 की पावर ऑड आने पे ये कैसा आएगा? नेगेटिव। तो सीधी सी बात ये है, अगर 3/3 डिटर्मिनेंट की बात करें, अगर इसके मैट्रिक्स की बात करें और इसके कोफैक्टर के साइन देखें, तो यहां देखिए इसका आएगा पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि 1 + 1 इज इवन नंबर, -1 रेज टू एन इवन नंबर इज पॉजिटिव। 1 + 2 ऑड, देन अगेन इवन, देन अगेन ऑड, इवन, ऑड, इवन, ऑड, इवन। सीधी सी बात यह है कि जब भी i + j एक इवन नंबर हो, तो जैसे यहाँ ऑड है तो माइनस, इवन नंबर है तो प्लस, इस तरह से किया जाता है। तो a12 माइनस लगाया, a12 विल बी मल्टीप्लाइड। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? उस इससे एक कम ऑर्डर के डिटर्मिनेंट से, यानी इसको एलिमिनेट कर देंगे। जिस रो और जिस कॉलम में ये है, उस रो और उस कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे। ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, बचा ये। तो ये आ गया a21, a23, a31, a33। फिर प्लस आएगा, प्लस दिस एलिमेंट a13 को मल्टीप्लाई करना है। किससे? a13 वाली रो और a13 वाले कॉलम को छोड़ दें जिसमें ये है, तो बचाइए a21, a22, a31, a32। अब ये कैसे होता है? हम इसको एक क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये मैट्रिक्स है, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। मान लिया हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ बुक। ए देर का 1 1 -2, 1 1 1, क्वेश्चन 6 1 1 -2, 2 1 -3, 2 1 -3 एंड 5 4 -9, 5 4 -9। चलिए इसको इवेल्युएट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 -2, 2 1 -3, 5 4 -9। कैसे होगा? फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, प्लस लगा के फर्स्ट एलिमेंट। अब इसके साथ डिटर्मिनेंट क्या? इस रो और इस कॉलम को छोड़ दे, ये बचा 1 -3 4 -9। बीच में माइनस लगाया, इससे 1 मल्टीप्लाइड बाय ये रो और ये कॉलम छोड़ दें जिसमें ये खुद है, तो बचा क्या? ये रो गई, ये कॉलम गया, तो 2 -3 5 -9, 2 -3 5 -9 प्लस इस बार ये -2 मल्टीप्लाई होगा किससे? ये रो और ये कॉलम छोड़ दें, तो 2 1 5 4, 2 1 5 4। 2/2 डिटर्मिनेंट हमने एक्सपेंड करना सीखा ही था। ये आ जाएगा 1 × -9 -4 × -3 -1। ये क्या आएगा? 2 × -9, 2 × -9 -5 × -3 प्लस -2 मल्टीप्लाइड बाय 2 × 4 -5 × 1, 2 × 4 -5 × 1। देखते हैं क्या है? 1 मल्टीप्लाइड बाय -9 minus into minus plus 12 minus 1, this is minus 18, minus into minus is plus 15, minus 2 plus into minus is minus, minus 2 multiplied by 2 4s are 8 minus 5. So this gives me 1 into 3 minus 1 into minus 3 minus 2 into 8 minus 5 is 3. So this will simply give me 3 plus 3 minus 6 is 0. The value of its determinant is 0, and this kind of matrix is known as singular matrix. So inverse is not possible. We will talk about it when we are talking about inverse of a matrix with the help of adjoint of a matrix and determinant of a मैट्रिक्स। अब बात करते हैं, ये तो हमने किया फर्स्ट रो के अलोंग और आंसर आया 0। अब इसको फर्स्ट रो के अलोंग ना करके हम अगर सेकंड रो के अलोंग करते फर्स्ट तो भी आंसर यही आता, तो हम एक्सपेंड करते हैं इसको सेकंड रो के अलोंग।
सेकेंड रो के अलॉन्ग किया कैसे, सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट यहां से लिया, ये इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन साइन कैसे आएंगे, माइनस प्लस माइनस, -1 की पावर -1 के, ये पोजीशन कौन सी है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1, 2 + 1 इज ऑड नंबर, माइनस प्लस माइनस, राइट। क्या करेंगे, इज इक्वल टू सबसे पहले -2, माइनस क्यों, क्योंकि ये पोजीशन इसका कोफैक्टर नेगेटिव है, -2 मल्टीप्लाइड बाय इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, बचा 1 - 2 1 - 2 4 - 9 प्लस कोफैक्टर कैसा आएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये 2 2 पोजीशन है, प्लस लगा के ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ दें, 1 वाली रो और 1 वाले कॉलम को छोड़ेंगे तो बचेगा 1, ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो 1 - 2 5 - 9, 1 - 2 5 - 9 प्लस माइनस, इसका कोफैक्टर कैसा आएगा, नेगेटिव, क्या लिखेंगे, -3, आप बताओ क्या आएगा, सोचो, इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे, तो इस रो और इस कॉलम को छोड़ देंगे तो 1 1 5 4, 1 1 5, ये आ गया -2, ये आएगा -9, -9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8 प्लस 1 -9 माइनस माइनस +10, माइनस माइनस दिस इज +3 एंड 4 - 5, तो देखते हैं क्या बना, -2 × -1 +1 × 1 +3 × -1, so this is 2 + 1 - 3 = 0। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, हम कोशिश करते हैं, मान लिया अगर यही क्वेश्चन को चेंज कर दो, यहां पर 2 जीरोस होते तो हम कहां से किसके अलॉन्ग एक्सपेंड करना पसंद करते, अलॉन्ग द सेकेंड रो, क्यों, क्योंकि सेकेंड रो में ये जो मल्टीप्लाई है ये 0, तो ये किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, फाइनली क्या देगा, 0, यानी सीधा सीधा हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे, अगर ये होता हम लिखते एक्सपेंडिंग अलॉन्ग सेकेंड रो, तो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम्स ऑफ 2, माइनस क्यों, क्योंकि इसका कोफैक्टर नेगेटिव, i + j -1 रेज़ टू i + j, ये नेगेटिव, या याद रखने के लिए सीधा सा ये सारे प्लस हैं 3/3 में और ये माइनस है। चलिए, तो -2 मल्टीप्लाइड बाय इस रो और इस कॉलम को छोड़ने पर बचा 1 - 2 4 -9 प्लस 0 -0, क्योंकि 0 इंटू कुछ भी करेंगे 0 आएगा, फिर इसका 0 इंटू ये, तो इससे क्या फायदा हुआ, -2 ये हो जाएगा दिस इज 1 -9 5 -2, बिकॉज ये अब ये 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि हमने इसकी एंट्री चेंज कर दी, राइट। सो 2 इंटू ये आ जाएगा -2 into -9 plus 8, that will give us -2 into -1, that is 2। अब इसका आंसर कितना आया, 2। अगर हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते हैं तो भी इसका आंसर आता 2। कैसे, ये हमारा 1 1 -2 हमने लिया 2 0 0 2 0 0 5 4 5 4 -9। अगर हम इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करते तो 1 के साथ प्लस लिखते हैं, पहले प्लस का 1 इंटू ये लिखते 0 0 4 -9, बीच में माइनस लगाया 1, अब क्या आएगा, ये इसको छोड़ा 2 0 5 -9 2 0 5 -9 प्लस लगाकर ये प्लस लगाकर ये -2 मल्टीप्लाइड बाय ये रो ये कॉलम छोड़ा 2 0 5 4 2 0 5 4, देखते हैं क्या बना, 2 ये आएगा कैसे, 1 टाइम्स ऑफ दिस इज 0 -0 -1 टाइम्स ऑफ -18 -0 -18 -0 प्लस -2 इंटू 2 4 जा 8 -0, so this will give us 0 -1 into -18 is +18 -2 into 8 is -16, that is +2, तो आंसर बन जाएगा।
हम इसको फर्स्ट कॉलम के अलाउंग भी एक्सपेंड कर सकते थे, तब भी इसका वैल्यू कितनी आएगी 2। तो फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट हम इसको करते हैं। तो सबसे पहला कोफैक्टर पॉजिटिव होगा, सॉरी दिस इज डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले 1 मल्टीप्लाइड बाय इस रो और इस कॉलम को छोड़ा 0 0 4 माइनस 9 0 0 4 माइनस 9, फिर माइनस लगा के अब इसके फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट कर रहे हैं। तो ये लिया 2, ये रो और ये कॉलम छोड़ दिया, तो बचा 1 माइनस 2 4 माइनस 9 1 माइनस 2 4 माइनस 9 प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस 5 के साथ क्या आएगा, ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं। 1 माइनस 2 0 0, क्या बचा 1 इंटू 0 माइनस 2 इंटू माइनस 9 प्लस 8 हो जाएगा। माइनस ऑफ माइनस 8 इज प्लस 8 प्लस 5 इंटू 0 माइनस 0 इज 0। सो फाइनली इट इज 0 माइनस 2 इंटू माइनस 1 प्लस 0, दैट इज 2। यानी हम किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम के अगेंस्ट किसी भी डिटर्मिनेंट को 3/3 को एक्सपेंड कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है कोफैक्टर के साइन का। अगर आप यहां से स्टार्ट करते हैं तो 2 and 1 क्या है 3, यानी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। यहां से स्टार्ट करते हैं प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, अल्टरनेट हमेशा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अल्टरनेट चलेंगे। तो आप कोई भी, जैसे हमारी बुक में क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा 3/3 के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं, उनको आपको एक्सपेंड करना है। कोई एक मैट्रिक्स, कोई एक डिटर्मिनेंट लीजिए, उसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करके देखो, फिर फर्स्ट कॉलम के अगेंस्ट एक्सपेंड करके देखो, सारे आंसर मैच होने चाहिए। इससे कैलकुलेशन पे परफेक्शन आएगी। दूसरा माइनस इंटू माइनस इज प्लस, और ये छोटी छोटी बातें जो है इस पर फोकस करना सीख पाएंगे और इस पर हमारी प्रैक्टिस होगी। फिर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स की। I hope you will be able to do exercise 4.1. Thank you.